Hi students, hello everybody, welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are going to deal with the important subjective questions of packing. So I hope that you all are pretty excited for the session. Alright, and we are definitely going to deal with the important aspects of everything. Alright, so please make sure that you all are going to listen to me very carefully and you all are taking the things in like consideration as well for your betterment and everything as well. Alrighty people. Alright, kindly share the link of the session with all your friends and call all of them so that they all understand this. That we need to know an art of writing an answer correctly. Okay, like when you're supposed to write an answer no, so you have to take care of all the facts, like you're taking care of your spellings and there are other aspects as well. So I'm going to tell you all that in this very particular session. That is why I want you all to be there and stay tuned for the entire session without any miss. Okay, it's really going to be an important thing. So we are going to talk about the important subjective questions of the chapter packing. It is your half yearly revision, and I am Preksha Sharma. Everyone, if somebody is new and watching this video for the very first time, then please keep this in your mind that I am Preksha Sharma. I am your English educator, and I have been guiding a lot of students for the past few years to be really good in the communication skills and to score good marks in the academics. Alrighty, people. So kindly make sure that you all are always following me dedicatedly. Whatever I'm saying, you guys are taking care of that. Alright. And you guys are listening every bit of everything in the right manner. Oh, alright, people. Is that clear? Okay. Is that clear, everyone? Yes, moving ahead, everyone, we are going to deal with the subjective questions of packing. All right, it's gonna be your half yearly revision, everyone. Can anyone tell me, everybody, like what exactly the given story is all about? What exactly did we study in the chapter packing? Who all can tell me this? What exactly did we study in the chapter packing? What is being given? How many characters are there? What do they really tell us? What do they really inform us? Can anyone please tell me this? If you guys know about it, well, then of course you all can share this with me. Yes, guys. Yes. Okay, so people see, packing is one of the chapters which is talking about the three friends who have decided to go on a trip. All right, and now half yearly revision it is going to be. So I want all of you to just be very detailed about all the aspects. Okay, just be careful about everything. That's gonna be really, really helpful. All right, is that clear? Is that clear to everyone? Quickly tell me, everyone. Yes, everybody. ओके चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ कि हमें क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना होता है ठीक है जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका जितने भी क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाली हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन अ वे आपका पूरा चैप्टर कवर करते हैं आपको अच्छे से उसकी इन्फो होनी चाहिए आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए पहले तो मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी हम इन चीज़ों के साथ डील करते हैं पहली बात कि आपका ना टेंस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऑल राइट टेंस कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है टेंस कंसिस्टेंसी का ये मतलब होता है कि आपको हमेशा ये देखना होता है कि आपके जो क्वेश्चन का टेंस दे रखा है ना आपको वही वाला टेंस यूज करना होता है आपके आंसर्स में भी ऑल राइट आंसर्स में भी आपका सेम टेंस होना चाहिए ऑल राइट कीप दिस इन योर माइंड
ऑल राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वहां पे क्या है, जैसे जेरोम है, ऑल राइट, जॉर्ज है, हैरिस है, दे आर द थ्री ह्यूमन कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। जेरोम जो है अब आपका मेन कैरेक्टर। आप अब देखो आंसर किस तरीके से, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, या ये तो 1 मार्क का आ सकता है, या ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है। 1 मार्क का ये आ सकता है आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में, जब आप लोगों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो उस केस में ये 1 मार्क का हो सकता है। लेकिन 2 मार्क का ये आ सकता है व्हेन इट्स जस्ट एन इंडिविजुअल क्वेश्चन। तो कितने कैरेक्टर्स हैं आपने देखा, सिंपल आर दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको वर्ब बताती हूँ। टेंस कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है, टेंस कंसिस्टेंसी से मेरा ये मतलब है कि जो आपका वर्ब दे रखा है आपके क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप चलोगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या देखा, आर दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, मैंने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, दे आर द थ्री मेन कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। फिर मैंने बोला जेरोम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, देयर पेट डॉग मॉन्टमोरेंसी टू इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हु पार्टिसिपेट्स, ठीक है। मैंने टेंस प्रेजेंट रखा हुआ है, एज एंथुजियास्टिकली इन द पैकिंग एज हिज मास्टर्स। सो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मेन आइडिया ये है कि अगर प्रेजेंट यूज किया गया है तो प्रेजेंट यूज करो, पास्ट यूज किया गया है तो पास्ट भी यूज करो। लेकिन अगर आपका ये यूज किया गया है, ये कहते हैं फ्यूचर यूज किया गया है, तो फ्यूचर यूज करो। ऑल राइट, सो दीज आर द थिंग्स, ओके, दीज आर द थिंग्स, ऑल राइट, these are the things that you guys have to keep in your mind. Is that clear? Is that clear to everyone? इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज उसमें मेंटेन्ड रखनी है, ओके। सो अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे अब आपने 3 कैरेक्टर्स आपके हो गया, सिंपल आंसर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप फिर से ध्यान से सुनो। ऑल राइट, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया एवरीवन, ऑल राइट। सेकेंड पॉइंट जो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आपको ना ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी स्पेलिंग सही हो, ठीक है। स्पेलिंग सही होना बहुत जरूरी है। स्पेलिंग्स के साथ साथ मतलब आपका वोकैब पार्ट सही होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी स्पेलिंग्स कहीं पे गलत होती हैं तो आपके 0.5 मार्क्स के डिडक्शंस हो जाते हैं। तो उन डिडक्शंस को हटाने के लिए आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ के साथ कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग्स रखो, जो स्पेलिंग्स आपके बुक्स में दे रखी हैं। साथ के साथ नो फैंसी वर्ड, ये बात ध्यान रखो, मतलब कि नो फैंसी वोकैबलरी। जैसे कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं, मैम मैम को अच्छा लगेगा मैं ये वर्ड यूज कर देता हूँ, कोई फायदा नहीं है, मैम को अच्छा नहीं लगता है, आप ही के मार्क्स कम होते हैं, तो डोंट लेट दैट हैपन, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ना टू द पॉइंट आंसर लिखना है। दैट मीन्स कि आपकी वर्ड लिमिट मेंटेन रहनी चाहिए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 20 से 30 वर्ड्स में आप अपने आंसर्स दे दो, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है, 3 मार्क का है तो 3 से 40 का दे दो, 4 मार्क्स का है तो 40 से 50, 5 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली 100 to 120 जाता है क्योंकि वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है उसके लिए कि इसमें क्या वर्ड लिमिट मांग रहे हैं, उस हिसाब से आंसर दो। लेकिन कभी भी किसी भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो आपका 2 या 3 मार्क का होगा उसमें कोई जरूरत नहीं होती एग्जैजरेट करने की। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वही सप्लाई करो, ठीक है, एक्स्ट्रा मत लिखो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं ना उनको हम डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, वो प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन होता है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। वो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? वो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, ओके। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो अब मैं ये क्वेश्चन आपका, चलो आगे चलते हैं।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप देखोगे ये सिर्फ 2 मार्क्स का है जो आपको 2 से 3 लाइंस में लिखना है बस। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बस यहाँ पे आंसर देना है, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो, इजी है, ओके, एंड गुड फॉर यू एज वेल। ऑल राइट, दिस इज वॉट वी हैव टू गो अहेड विथ। आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग? ठीक है, वाई डिड, ठीक है, डिड आपका कौन सा टेंस है? नरेटर वॉलंटियर, सो दिस इज डिड प्लस वॉलंटियर। कौन सा है टेंस? टेंस बताओ मुझे। मैं आप लोगों को टेक्निक बता रही हूँ कि आंसर कैसे लिखते हैं। कौन सा टेंस यूज किया गया इधर, जल्दी बताओ क्विकली इन दी कमेंट सेक्शन। कौन सा टेंस यूज किया गया? टेंस यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट यूज किया गया। तो दिस इज एन इंडिकेशन फॉर यू कि आप पास्ट टेंस यूज कर सकते हो, बीट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, एनीथिंग, बट यू हैव टू गो अहेड विद द पास्ट। ऑलराइट, दैट इज द राइट वे व्हेन वी आर राइटिंग एन आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इट्स अ 2 मार्क का क्वेश्चन, सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ इन ऑर्डर टू केटर व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड। इसने सिंपल क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग? नरेटर ने क्यों वॉलंटियर किया, उसने खुद से क्यों बोला कि वो पैकिंग करेगा? तो आप जब भी आप एक चीज को डिस्क्राइब करते हो, जैसे जेरोम है, जेरोम इज द नरेटर, अब आप लिखना चाहते हो वो नरेटर है, तो आप हमेशा कमा डालोगे, फिर आप द नरेटर, फिर कमा अगेन, दैट्स इट। ओके, जेरोम कमा द नरेटर। ऑल राइट, प्राइडेड हिमसेल्फ, प्राइडेड का क्या मतलब होता है कि उसको बहुत ही ज्यादा इस बात की खुशी थी, वो मतलब एक तरीके का घमंड करता था। तो आप यहाँ पे अब ये देखोगे कि मैंने क्या क्या वर्ब्स यूज किए हैं। प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज पैकिंग स्किल्स, मतलब उसको ना अपनी पैकिंग स्किल्स में बहुत ही ज्यादा प्राइड था। ठीक है, तो बेटा आपको जब आंसर लिखना है ना 2 मार्क्स का, उसको टू द पॉइंट रखो, जितना बोला जा रहा है उतना। और फिर he wanted to show off his skills to his friends, so he volunteered to do the packing. However, ये ट्रांजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। However, ठीक है, जब भी आप लिखोगे, आप अगर 10 लिखते हो, आप अगर therefore लिखते हो, आप अगर hence लिखते हो, इन सब के बाद आप हमेशा कमा लिखते हो। ऑल राइट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि इन सब के बाद आप कमा लगाओ, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, he had expected that his friends would work under his guidance and directions. All right, he expected that under his guidance, even poor packers like Harris and George could accomplish his task with great efficiency. ठीक है, so यहाँ पे basically what are we talking here about is, okay, here we go, prided, ठीक है, wanted, ठीक है, verbs देखो आप, यहाँ पे मैं आपको कंसिस्टेंसी की बात बता रही हूँ, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हो ना, टीचर मार्क्स काटती है। एक्सपेक्टेड, ऑल राइट, सो आप इस तरीके से ध्यान देते हो कि हमें वर्ब्स कैसे यूज करनी है। स्पेलिंग्स आपकी सारी, जैसे वॉलंटियर्ड, ऑल राइट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ब्स। सो आपको हमेशा स्पेलिंग का ख्याल रखना है, आपको एक कोहेरेंस मेंटेन करना होता है। कोहेरेंस का मतलब ये होता है दैट इमीडिएट, लाइक वट एवर यू आर यूजिंग नो, I mean, whatever you are writing in the first line, it should have the link with your second line, then with your third line, then with your fourth line, and so on. Okay, that's how you should be definitely going ahead with. Is that clear, everyone? समझ आई सबको ये बात? Is that clear to everybody? Yes. Clear? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। यस, दीज आर द बेसिक थिंग्स गाइज। आपको क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है ना, आपको हमेशा उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। पहली चीज नीट एंड क्लीन रखोगे आप, दूसरी चीज टेंस कंसिस्टेंसी, स्पेलिंग ध्यान दोगे, थर्ड चीज, और वोकैबुलरी के साथ कोई फैंसी वर्ड नहीं आएगा। ट्रांजिशन वर्ड्स लिख रहे हो तो उसके बाद कमा जरूर लगाओ। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई मिस टेलिंग यू ऑल नो, लेट मी टेल यू इन दिस वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, पंक्चुएशंस मैटर।
ठीक है, पंक्चुएशंस मैटर करती हैं, पंक्चुएशंस के भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये कमा लगाया, यहाँ पे कमा लगाना आप भूल जाते हो तो यहाँ पे आपका मार्क कट जाता है। तो आपको ना मतलब ऑब्वियसली आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन में मतलब व्हेन द टीचर्स दे आर टीचिंग दे आर नॉट वेरी strict in like deducting mark for every mistake like that, but of course there is always a way to present your answer. If you are doing something in your question, I mean answers, and you're presenting it in a good manner, then you should present it correctly. All right, so that's how you should be definitely going ahead with. Okay, is that making sense to everyone? All right, is it making sense to everybody? Quickly tell me. All righty people. So अब हम चलते हैं आगे all right next question की ओर. I hope आपको ये question clear हो गया है. All right, so the narrator took pride in his packing skills. Comment. ये एक बहुत important question है, 3 marker है और ये same question 5 marks में भी आ सकता है. All right, hi stimulating son. All right. Is that clear? All right people, so the narrator took pride in his packing skills. Comment. So अब आप ये देखो, the narrator all right felt that packing was one of those things that he felt he knew more about than any other person living. Okay, अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन में ना आपका खुद का व्यू पॉइंट मांगा, आई मीन व्यू पॉइंट तो नहीं, मतलब आपका सिर्फ एक कमेंट मांगा गया है कि नैरेटर को ना बहुत ही ज्यादा घमंड था अपनी पैकिंग स्किल्स पे. ऑल राइट, सो उस चीज पे आप कमेंट करो. तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या है कि आप क्वेश्चन एक नॉर्मल वे में टुक आपका वर्ब है जो यूज किया जा रहा है. ऑल राइट, मैंने यहाँ पे टेक्स नहीं बोला, राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, टुक. टुक ये हमारा जो वर्ब है वो यूज किया जा रहा है. ठीक है, सो टुक इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट, टुक इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट माय वर्ब, ऑल राइट, विच इज इन द पास्ट टेंस. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो अहेड विद. Narrator felt that packing was one of those things that he felt he knew more about than any other person who is living. All right, this made him develop a sense of superiority about his ability as the best packer, and he took pride in his packing skills. However, he was disorganized and bungling. देखो, आप जो वर्ड्स में यूज कर रही हूँ वो वर्ड्स एक्चुअल में आपके चैप्टर से ही आ रहे हैं. राइट, डू यू ऑल एग्री, यस और नो? सो आपको बेसिकली जो आंसर फ्रेम करना है ना, इट शुड बी दिस वे दैट इट्स मेकिंग सम सेंस. लाइक इट शुड बी लाइक कि पहले हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. Many students, what do? They start from the event which took place at the third place and then they talk about the first and the second events. There's always a way when you're writing an answer. आपका हमेशा एक तरीका होना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हो. So यहाँ पे आपको बेसिकली वो तरीका फॉलो करना है so that you come to the right answer. All right, this is very important. So what do we see here? That the narrator felt that packing was one of those things that he felt he knew more about than any other person living. This made him develop a sense of superiority about his ability as the best packer, and he took pride in packing skills. However, के बाद comma, he was disorganized and punctually. First, ठीक है, comma, he forgot to pack the boots and had to reopen the bag. तो पहले तो वो भूल गया था boots को पैक करना, फिर उसे फिर से ओपन करना पड़ा बैग. देन उसके बाद आपने देखा फिर से आया. ऑल राइट, कमा, हिज फ्रैंटिक सर्च फॉर हिज टूथब्रश. ऑल राइट, जो वो पागलों की तरह अपनी टूथब्रश ढूंढ रहा था, रिजल्टेड इन अ कंप्लीट मेस. वो एक प्रॉपर पूरा मेस था. लेटर बाद में ही हैड टू री ओपन द बैग. बाद में उसको फिर से बैग को खोलना पड़ा टू टेक आउट हिज स्पेक्टिकल्स. सो दिस इज हाउ यू गो अहेड विद इट. नाउ अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट हेयर कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं. जैसे कि यहाँ पे आपने वर्ब को कंसिस्टेंट रखा. ऑल राइट, ही न्यू मोर, दिस मेड हिम. ऑल राइट, हाउएवर ही वाज डिसऑर्गेनाइज्ड. ऑल राइट, ही फॉरगॉट टू पैक एंड हैड टू रीओपन इट. देन फॉर हिज टूथब्रश रिजल्टेड. ऑल राइट, लेटर ही हैड. ऑल राइट, ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए
Keep it in your mind कि आपकी consistency maintain रहे. The more you're gonna be focused to this, you'll be getting into a good habit for your lifetime to be a good writer without any mistakes. And it's really important not to make any mistakes when you're writing, because you are judged on the basis of that. Okay, is that clear? Is it clear? Yes or no, everyone? समझ आया? Yes or no, please बोलिए comment section में, so that I'll understand that yes, you are understanding it. Quickly, everybody. Yes, everyone, quickly. Is that clear? Alrighty, people, here we go. Alright, people. So, yeah. Now, moving to the next question, everyone. What does the next question talk about? All right. Next question says, okay, how did George and Harris react to Jerome's offer to do the packing? Did Jerome like their reaction? So जब भी आपका क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहली चीज जो आपको हमेशा ध्यान देनी है वो आपको ये ध्यान देनी है. ऑल राइट. ओके, आपको जो पहली चीज ध्यान देनी है वो आपको ये ध्यान देनी है that you should be able to. All right, you should be able to understand that what does it really mean. I mean, at times you're expecting the question to be how, but you take it like, you take it to be like when, something like this. Okay, this comes to your mind. All right, so that is what you have to be very careful about when you are just understanding it and when you are just listening to everything. Okay, it's pretty important for everyone right in there. All right, is that clear to everybody? ओके, सो इस क्वेश्चन में आपने फिर से देखा डिड दे रखा है और रिएक्ट दे रखा है. सो डिड प्लस रिएक्ट दे रखा है हमें. सो डिड हमारा पास्ट है, रिएक्ट हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे रखा है. ऑल राइट, कि कैसे, अब ये पास्ट टेंस है, कि कैसे जॉर्ज और हैरिस ने रिएक्ट किया जेरोम के ऑफर को पैकिंग करने के लिए. क्या जेरोम को उनका रिएक्शन पसंद आया? So you will say that George and Harris who were rather lazy. अब यहाँ पे मैंने कमा क्यों डाला है? क्योंकि मुझे डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे थे. ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि जब भी आपको एक नाम के मतलब जब भी आपको एक चीज, कोई ऐसी चीज है जो आपको डिस्क्राइब करनी पड़ती है, कोई चीज जिसका नाम लिख के, उस केस में आप हमेशा ही मतलब इन दैट केस यू विल ऑलवेज बी टेकिंग राइटिंग अ कमा बिफोर एंड आफ्टर इट, बिकॉज दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट. All right, that is very important. So George and Harris, who were rather lazy, they agreed readily. Immediately उन्होंने agree किया जेरोम के offer को to do the packing करने के लिए, because both, क्योंकि दोनों took it as an opportunity to sit back and relax. क्योंकि दोनों ने इसे एक तरीके की opportunity ली कि वो दोनों आराम से बैठें और relax करें, while someone else did the work. जबकि कोई और जो है वो काम करता. All right. जॉर्ज स्प्रॉल्ड ओवर द इजी चेयर. ओके, जॉर्ज स्प्रॉल्ड हुआ, आराम से बैठ गया वो इजी चेयर पे. वाइल हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने क्या लैंग्वेज यूज की है. एट टाइम्स व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर नो पीपल, सो दिस इज रियली बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. निको बेटा, आपको क्या समझ में नहीं आया? हाय मुस्कान. सो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप जैसे आंसर्स लिख रहे होते हो ना, तो यू हैव टू बी लाइक अ लिटिल बुकिश इन योर लैंग्वेज एट टाइम, सो दैट यू गिव एन इम्प्रेशन टू योर टीचर that you did a keen reading of the chapter. All right, this makes it so clear or vivid to the teacher, whosoever is checking your paper, your sheet, that you have done the reading of the chapter. You know it, okay? You understand it. All right. Is that making sense to all of you? Yes, guys. Is that making sense?
and while someone else did the work. So George sprawled over the easy chair, okay, while Harris cocked his legs on the table. तो जॉर्ज आराम से ऐसे वो लेट जाता था इजी चेयर पे, और हैरिस जो अपनी मतलब क्रॉस लेग करके वहां पे बैठ जाता था. Okay. Now Jerome did not at all like this reaction because he had actually wanted to supervise. क्यों Jerome को बिल्कुल नहीं पसंद आया था, right? Why? Because he wanted to manage. He wanted to boss the job. That is what he said. He wanted to supervise everything and instruct them on how to do packing instead of doing it himself. वो basically उनको ये instruct करना चाहता था कि हमें packing कैसे करनी चाहिए. मतलब वो खुद ही कर लें उससे अच्छा तो वो उन्हें उनसे पता करना चाहता था कि कैसे कर सकते हैं. All right. Is that clear? Everyone? Yes, so it can be a 2 marker, it can be a 3 marker, anyway the way you want it to be. All right, and this question has to be always answered in such a way that you are serving both the two questions well. Okay, at times this happens in the examination, the kids feel कि हमने तो पूरा question का आंसर दे दिया, लेकिन आप second part भूल जाते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा practice करना पड़ेगा, जिससे कि आप जो उसका second part है, you don't forget it, you keep it in your mind. All right, it's really an important thing that I'm mentioning to all of you right away. So please make sure that you guys are just keeping all these things in your mind, because when you're practicing writing the answers, no, which you should. I don't know if you guys are doing that or not, because I had instructed this to all of you that you should practice. So once you guys practice this, no, so it becomes really important that you pay attention to all these things. All right, am I clear on this? Everybody. Am I clear on this, everybody, guys? Right? I hope that I am clear on this. Okay. Alrighty. So let's making a move ahead. What do we see? That we have to always be catering the answers to both the questions. Next, everyone. ठीक है. अब ये वाला हमारा question है. इसमें भी हमारे दो parts दे रखे हैं. ठीक है. What did Harris and George do while Jerome was packing the bag? कि Harris और George ने क्या किया? All right, जब Jerome pack कर रहा था bag को. How did Jerome react to their behavior? Jerome ने उनके behavior पे कैसे react किया? When Jerome told George and Harris to leave the job of packing to him, they accepted his suggestion at once. ये हुआ था. मैं direct answer दे रही हूँ. Okay, मतलब मैं कहीं और मतलब digress नहीं हो रही हूँ. I'm keeping it to the point. That's how you have to give an answer always and forever. So when Jerome told George, जब उसने जॉर्ज को बोला और हैरिस को टू लीव द जॉब ऑफ पैकिंग, कि वो ना उस पे छोड़ते पैकिंग का, तो उन्होंने फटाफट से उसके ये सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया. दे सेटल देमसेल्व्स. देखो ध्यान से, डिड दे रखा है, डू दे रखा है, डिड प्लस डू. तो मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे, आपका ये सिंपल है. ऑलराइट, डिड प्लस डू क्या है? डिड प्लस डू में all right, you go ahead with the simple form of the simple past form of the verb. तो आपको past form use करना है. told आ गया आपका यहाँ पे, settled आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है. फिर आपका यहाँ पे watched आ गया. all right, फिर आपका यहाँ पे made आ गया. all right, फिर यहाँ पे smoked आ गया. ठीक है. please keep all these things in your mind. accepted आ गया. so you have to be very careful always and always about it. So when Jerome told George and Harris to leave the job of packing to him, they accepted his suggestion at once. They settled themselves comfortably, George on the easy chair and Harris with his legs on the table, and watched Jerome packing the bag all by himself. As they watched, they smoked and found. Okay, words consistently used करने हैं. They found faults with Jerome's packing and also made fun of him. Again, verb. They made him reopen the packing by inquiring about items he had forgotten to pack. Okay, had forgotten. Okay, and all this irritated Jerome. So that's how you have to give an answer to the question. Pretty easy and quite straightforward. Yeah, you don't have to exaggerate बेटा, क्योंकि आप exaggerate करते हो ना, आप अपने marks को क्या कहते हैं reduce कर रहे होते हो. मार्क्स को किस तरीके से reduce कर रहे होते हो? Of course, इसका ये मतलब नहीं है कि negative marking है. इसका ये मतलब है आपको टाइम देना होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में. ठीक है, आपको वहां पे अच्छा खासा टाइम लगाना होता है, आपको अच्छा खासा टाइम ग्रामर में लगाना होता है, राइटिंग स्किल्स में लगाना होता है. तो उसके लिए यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डील विद दैट. ऑल राइट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आई ये बात? यस गाइस, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस और नो? समझ आई? रीड बेटा, सब मैनेज हो जाता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू जस्ट मेंटेन अ बैलेंस, लाइक व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.
ओके, जस्ट ये सारी चीजें थोड़ा सा ख्याल में रखना होता है एंड यू कैन डू इट बेटर. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ आई बात? ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे. Now, when he offered to pack, Jerome's real intention was not to do packing himself. Elaborate. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई मीन बहुत अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब उसने बोला ना मैं पैक कर देता हूँ, तो उसका पूरा इंटेंशन ये ऑफ कोर्स नहीं था कि वो पैकिंग खुद से ही करे. इलेबोरेट कीजिए. सो जेरोम्स रियल इंटेंशन, मतलब उसकी जो असली इंटेंशन थी, वॉज नॉट टू पैक हिमसेल्फ बट टू मेक हिज फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस वर्क अंडर हिज डायरेक्शंस एंड सुपरविजन. उसका एक्चुअल मकसद क्या था? उसका एक्चुअल मकसद यही था कि वो खुद से पैक ना करे, इंस्टेड वो अपने फ्रेंड जॉर्ज और हैरिस को डायरेक्ट करे और सुपरवाइज करे पैकिंग करने के लिए. ऑल राइट, ही वुड गाइड एंड डायरेक्ट. ओके, वो गाइड करेगा और फिर डायरेक्ट करेगा. एंड पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, और उनको मतलब साइड करे हर दूसरी मतलब उनको बस डायरेक्ट करे कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, लाइक दैट. शोइंग देम द राइट वे ऑफ पैकिंग थिंग्स, उनको सही तरीका सिखाना पैक करने का चीजों को. रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, मतलब कि जैसे सही में उनको सिखाना. तो दैट इज व्हाट वी कम टू नो, दैट इज व्हाट ही डिसाइडेड अपॉन. ऑल राइट, तो उसने ये चीज डिसाइड करी थी. इज दैट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? Yes, everyone. Is that making sense to everyone? Yes, everybody. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ अ मैन डिड द नरेटर वंस लिव विद? नरेटर आपको पता है इज जेरोम, राइट? सो एट टाइम्स यू मे गेट द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन wherein Jerome is given in one question, narrator in the other for the given chapter. Don't be confused like who is the narrator or who is Jerome. You should know that narrator and Jerome, they are same. Okay, you should know this clearly. I hope that's clear to you guys. So किस तरीके का इंसान था narrator? All right, once sorry, what kind of a man did the narrator once live with? मतलब किस टाइप के इंसान के साथ narrator एक बार रहता था? That's what we have to here talk about. So now it says the narrator lived with a man. Narrator एक आदमी के साथ रहता था एक बार, who used to annoy him, जो उसको ना बहुत ही annoy करता था, तंग करता था. He would loll on the sofa, यानी कि वो सोफे पे पड़ा रहता था, and watch the narrator doing things by the hour together. ठीक है, और ये देखता था, मतलब कि और देखता रहता था कि narrator कर क्या रहा है. He said it did him real good to look on at the narrator messing about. वो कह रहा है उसको ना बड़ा मजा आता था जब वो ये देखता था कि नैरेटर जो है वो मेस कर रहा है. सो दैट इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट. ऑल राइट, इज दैट मेकिंग सेंस एवरीवन? इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीबडी? क्विकली एवरीबडी, इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, here we go, everyone. Next question, everybody. Now I'm not like that. What does the narrator intend to convey by this statement? देखो, chapter को पढ़ना इसलिए important है क्योंकि we never know line one liner based आपके questions आ सकते हैं, that you'll have to just discuss certain things or tell something on the basis of the line which is being taken from any of the chapters, or maybe you'll have to do something in the context of the extract. So we don't know what exactly is coming for you all in your examination, and that is why you have to be smart enough to understand all this correctly. Okay, and for that what I'm again recommending to everyone right in there is to read. All right, please make sure that you all are reading. It really does matter. ठीक है, रीड करना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर नॉट रीडिंग, you are missing the important aspects. So don't let that happen. All right, is that clear to everyone right in there? सबको समझ आया मैंने क्या बोला? Everybody, you get that? Okay, so चलिए आगे चलते हैं. Now I am not like that. Okay, what does the narrator intend to convey by this statement? So by this statement the narrator intends to convey his dislike for sitting idle. ठीक है, मतलब खाली बैठना जो उसको पसंद नहीं है, and watching someone else work hard like the men he lived with did. But you know what?
he himself is like that, and that is why we see the sarcastic, I mean that is why we see the double face of the narrator right in here. So he prefers to walk. All right, अब आप देखो यहाँ पे does use किया है, मैं उसी हिसाब से आपका जो है क्या बोलते हैं words को यहाँ पे use कर रही हूँ. Supervise means, so you have to be smart enough to deal with it in the right manner. So by this statement the narrator intends to convey his dislike for sitting idle and watching someone else work hard, like the man he lived with did. He prefers to walk around, वो prefer करता है कि वो आसपास ऐसे घूमे and supervise work in his natural energetic way. However, this actually means that he too was not interested in toiling but liked to boss over others. Okay, that is what we are here talking about. All right, is that clear, everyone? Is that clear, everybody? Is that clear, guys? ठीक है, चलते हैं आगे next question की तरफ. What did Harris ask the narrator after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? Okay, so Harris ने narrator को क्या बोला जब बैग जो है वो बंद हो गया, shut हो गया और strap कर दिया उसको? Why do you think he waited till then to ask? आपको क्यों लगता है कि उसने तब तक wait किया था? All right, पूछने के लिए. So after the bag had been shut and strapped by the narrator. All right. So after the bag had been shut and strapped by the narrator. All right. तो अब अभी देखो यहाँ पे फिर से past हो गया. All right. Okay. वह फिर से हमारा past tense हुआ. All right. ओके सो गाइज फिर से पास्ट टेंस हुआ है तो आपको फिर से यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस कि आप फिर से अपना वर्ब सही से यूज कर रहे हो. सो व्हाट डिड हैरिस एज द नरेटर आफ्टर द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? So after the bag had been shut and strapped by the narrator, Harris asked him whether he wasn't going to pack the boots. He waited till the completion of packing to say this because he either thought the narrator knew about them and would peg them as he wanted to, or more likely he wanted to irritate the narrator and have fun at his expense. All right, do you all understand this now? Everybody, do you all get that what I mean right in here? What are we exactly here talking about? So we see जो बैग बंद हो गया था नेटा के द्वारा, तो हैरिस ने उससे पूछा कि वो जा रहा है बूट्स पैक करके, आई मीन वेदर ही वाज गोइंग टू पैक द बूट्स और नॉट, मतलब कि वो करेगा या नहीं, आई मीन उसको करना है कि नहीं करना है. तो वो तब तक वेट कर रहा था जब तक वो कंप्लीट नहीं हो गया, और जब वो कंप्लीट हुआ तब उसने उस चीज के लिए बोला. ऑल राइट, इज दैट मेकिंग सेंस एवरीवन? इज दैट मेकिंग सेंस एवरीबडी? Yes, quickly tell me, everyone. Okay. Now, next question. What horrible idea occurred to Jerome a little later? It is an important question. Okay, it's an important question. Okay, because यहाँ से हमें पता चलता है that the I mean ये एक ऐसा important event है जिससे हमें पता चलता है that the story is really a humorous story. All right, so herein we have got the fun elements with us. All right, that is what you all will have to keep in your mind. That's what these particular questions are hinting to, and that is what they are telling us as well. Okay, keep it in your mind. It's really important to understand. Okay, clear, everyone? All right. So what horrible idea occurred to Jerome a little later? After packing everything in the bag for the second time, the horrible idea that occurred to Jerome was that he had packed his toothbrush in the bag. So the entire incident, I mean the entire idea of the toothbrush in the bag or not, okay, is really a very, you can say it's really a very funny thing.
Okay, he realized that he would need his toothbrush the next morning, so he reopened his bag and turned everything out, but he couldn't find it. So आपके लिए ना आपको ये clear होना चाहिए. Elisak, hi, good evening, dear. So आपको ये clear होना चाहिए, all right, that what exactly we are here dealing with और यहाँ पे क्या बात हो रही है. All right, it's really an important thing to be kept in your mind. All right, is it clear to everyone? Is it clear to everybody? Right? चलिए next question की तरफ. Who offered to pick the bag for the trip? Was he happy at his own offer? All right. Sorry, basically to pack the bag. Okay. So yeah, यहाँ पे basically क्या है कि the author and his friends decided to go on a holiday. देखो अब ना ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. 5 मार्क का क्वेश्चन में ना आप हमेशा डिटेल्स दोगे मुझे. ऑलराइट, इट हैज टू बी रियली डिस्क्रिप्टिव. आपको उसे डिस्क्रिप्टिव रखना ही पड़ेगा. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट कि क्या डिटेल्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं. Okay, so we see the author and his friends they decided all right to go on a holiday. उन्होंने decide किया कि वो एक holiday पे जाते हैं. All right, now the author who saw himself as an expert in packing, उसने क्या किया. देखो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि जब आपको आंसर्स बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने होते हैं ना, तो आप हमेशा ना एक कोट मतलब एज इन कि जिस कैरेक्टर ने जो बोला है यू कैन ऑलवेज कोट दैट. ऑल राइट, जैसे कि इस वाले केस में जस्ट अ मोमेंट एवरीवन. ऑल राइट, सो जैसे कि इस केस में आपने देखा डबल कोट स्टार्टेड आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. Okay, packing is one of the, sorry, packing is one of the things, all right, those many things that I feel I know more than any other person living. So यहाँ पे आके ये बंद हो रहा है. So that is what we are here talking about. All right, that's what you are even mentioning here, and it's really important to understand as well, because herein we are basically talking about what we are basically talking about the quotation quote, I mean the direct words that are being said by him. So whenever you are dealing with the direct words that are being told by someone, you are always going to do what? You are always going to just make sure that you're keeping it under double inverted commas. And this is a cut clear indication that the student has given a keen reading to the chapter, and the student is a well-read is a well-read student. That means that he does know how, like, what exactly the chapter is all about and how it is being described. Okay, is that clear to everyone? समझ आया? So we see he told his friends George and Harris that he would do the packing. ठीक है? So they really agreed to his suggestions. उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने suggestions मान ली. George sat in an easy chair while Harris put his legs on the table. The author had not intended this. He was unhappy with himself for having offered to pack. All right, it was like that he had fallen in his own trap. Okay, he was unhappy with himself for having offered to pack. He had thought that Harris and George would pack and he would supervise them, teaching them how to do things better. When he worked and his friends relaxed, he was greatly irritated. All right, वो बहुत ज़्यादा ही irritated था. All right, is that making sense to everyone? Yes, everyone. Quickly tell me. Yes, guys. Quickly, everyone. Alrighty, people. So let's get going, everyone. Okay, we are moving to the next question. We need to briefly describe Jerome's attempt at packing. कि मतलब उसने जो packing करी थी, तो हमें उसके हमें उसको briefly describe करना है कि किस type की packing थी, all right, and how did he do that, all right, that's what we have to here talk about. So right in the beginning, मतलब बिल्कुल beginning में Jerome ने volunteer किया था, okay, pack करने के लिए, all right, that is what we see. And यहाँ पे what do we see?
All right. So right in the beginning, Jerome ने volunteer किया था पैक करने को because according to him, उसके हिसाब से he was especially good at it and George and Harris agreed readily. What Jerome of course had meant was that he would supervise the packing while they packed. They of course meant he would pack while they watched from lounging positions. Okay. Jerome packed all their personal belongings from boots to toothbrushes. Alrighty. Is that clear? And we see what, like when he had finished, Harris pointed out whether he wanted to leave the boots out. All right, that's what we see right in here. Okay, quickly, just tell me that you all are understanding everyone. Okay. So once the boots were packed, एक बार जब boots pack हो गए थे, Jerome realized he needed his toothbrush out for the morning, so the entire bag had to be unpacked and the toothbrush searched. All right, people. So it was found in a boot. The bag was again repacked, and when Jerome discovered he had packed his spectacles in once again, all right. So we see the bag was unpacked to take out the spectacles and then repacked. After going through several unpleasant rounds of unpack, repack, unpack, repack, the job was done with only the soap possibly having been forgotten. All right. नेक्स्ट एवरीवन ऑफ द थ्री जेरोम जॉर्ज एंड हैरिस ये सारे 5 मार्क के क्वेश्चन है बेटा जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं हम उनको एक तरीके से कैसे लिखते हैं हम उनको 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम हमेशा लाइक वी ऑलवेज राइट देम इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट all right you need to understand this okay is that clear everyone is that clear to everybody all right चलिए आगे चलते हैं Okay. Now we see of the three, Jerome, George, and Harris, who do you think is the best of the worst packer? Okay, or the worst packer? Support your answer with details from the text. So according to me, Jerome is the best in packing. Although Jerome, George, and Harris are equally disorganized. ठीक है हमें ये लिखना है ठीक है as packers Jerome is not as clumsy as his two friends Harris and George while Jerome takes a lot of time to pack the bag George and Harris damage a lot of things while packing the hamper Jerome who considers himself a skilled packer is able to arrange the items to be packed in the bag neatly and in order However, there's a lot of delay because he first forgets to pack his boots and then forgets having packed his toothbrush. After unpacking twice, he again packs in his spectacles absent mindedly. On the other hand, both Harris and George messed up everything. They began by breaking a cup. And then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squashed it. George stepped on the butter, then Harris sat on it. They spread salt all over the place. Of course, Montmorency constantly got in their way and made things worse. Once the hamper was packed and closed, Harris sat on the lid of the hamper and said he hoped nothing would be found broken, to which George replied that if anything was broken, it was broken. Thus, we can easily conclude that though Jerome and George and Harris bungled equally. However, Jerome did not cause as much breakage or chaos as George and Harris. Okay, is that clear to everybody? Yes, guys, is that clear to everyone? Okay.
चलिए, how did the butter episode in the story cause nuisance, as in like annoyance? ठीक है, the butter episode in the story caused a lot of nuisance as it brought out the bungling clumsiness of George and Harris. First of all, Harris stepped on the butter and it stuck to his slipper. After George had got it off the slipper, he and Harris tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They would then they had narrator, all right, had then the narrator had scraped it out at last and put it down on a chair. Then Harry sat on it and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. All right. So I'll take my oath. I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat. George finally noticed it behind Harry's back from where it was removed and put inside the teapot. Hence, the butter episode created a lot of nuisance and became the funniest episode in the story. Now, do you find the story funny? What are the humorous elements in it? The story is very funny with dry and slapstick humor. It's very important. You need to remember it to write the good answer, all right, in your examination. The chaos and confusion created by all the characters is very amusing. The gap between the self-assessment of Jerome, George, and Harris and their actual capabilities is highly entertaining. Montmorency's contribution to humor is no less significant, all right. So Jerome's sense of pride about his packing skills and the manner in which he packs the bag is very funny. He claims, I'd rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. While Jerome expected to use the opportunity for bossing over his friends, of pushing them aside every now and then with, oh, you. Hell, let me do it. There you are, simple enough. ठीक है, यहाँ पे मैंने कोट किया है चैप्टर से, जिससे कि आपको ये समझ आए कि हमें इस तरीके से कोट करके आंसर की प्रेजेंटेशन हम अच्छी बना सकते हैं. All right, they make him toil instead, lounging about and offering helpful suggestions. Jerome's forgetfulness in the subsequent unpacking of the bag many times over is quite amusing. All right, then we have the last part of the answer. The butter episode in particular generates a lot of laughter. First of all, George steps on the butter and it sticks to his slipper. After George has got off his slipper, he and Harris try to unsuccessfully put it in the kettle. They put it down on a chair and then Harris sits on it and it sticks to him. And they go looking for it all over the room. George finally noticed it behind Harry's back from where it is removed. Montmorency the dog too adds to the humor with his habit of getting in the way of things. His indiscipline and inquisitiveness. ये सारे words हम हमेशा add कर सकते हैं जब हम क्या कहते हैं answers लिखते हैं. All right, basically curses and manages to put his leg, all right, and chase lemons like red. Still he's hit by Harris with a frying pan. So all these instances lend humor to the story. So guys, we are done with all the important questions. I hope that you all really understood it. Now you know CBSE Class 10 Achievers List, remarkable performance by Unacademy learners in CBSE Class 10 board examination 2022. Okay, we saw that. You can be the next learner. 99.8% highest scorer, 412 plus learners secure 90% or more, 100 plus learners secure 95% or more, and 114 plus learners secured 100 marks in different subjects. आइकॉनिक और प्लस है हमारा बेटा. आइकॉनिक में आपकी पर्सनल गाइडेंस है, वन ऑन वन गाइडेंस है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट से, टेस्ट एनालिसिस है, वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम द टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स, स्टडी प्लानर है, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यू, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्पेशलाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट, एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस हैं, स्टडी बूस्टर वर्कशॉप बाय एग्जाम एक्सपर्ट्स. प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस. So herein the idea is that if you guys are gonna go ahead with the iconic, you will definitely be getting the benefits of plus. And we are back with Unacademy unlock 20% off on CBSE Iconic subscriptions. Okay, so this is from August 22 to 26 for 6 months. Let's say the current price, I mean before 22nd it was 22,483. What you're gonna pay 17,986. So what do you say? 4,497, 20%, right? It's really gonna be good. So क्या करना है बेटा, कोड लगाओ PSH10 and you will be getting 20% discount. Don't delay your success.
Okay, this is basically the number 8585858585. Go ahead with this and for your betterment. Then we have Unacademy unlock 20% off on CBSE Plus subscriptions, August 22 to 26. For example, for 18 months, this is 30,499. What you pay 24,399, and what you save 6,100. So this is 20% saving. Go ahead with the best for yourself, for your betterment, everyone. Discuss it with your parents because the date is only till 26th of August. So jaldi se ye code use kar lo, PSH10. All right, and go ahead with the number 8585858585. Okay. Now, coming to the Warriors batch, everyone. This is for class 9th. We got this started on August 18. Mode of delivery is English. We are dealing with the full syllabus share. You have Rashmi Ma'am, Lakan sir, Akash sir, Himal sir, and Kunal sir for social science, English, Hindi, science, and maths. So make sure that you all are definitely going ahead with it. Then we have the Warriors batch for the full syllabus. This is class 10. Start date is August 18. Mode of delivery is English, science, maths, social science, Hindi, and English. Santosh sir, Vishal sir, Sikandar sir, Akash sir, and Lakan sir. They are all here for you, for your betterment. PSH10 is the code. Make sure that you all are definitely going ahead with this. Okay, because you'll be getting 20% discount on this. So I hope you all love the session. We are gonna catch soon. Take care. Bye-bye. Thank you, everyone. If you're watching the video for the first time, do not forget to hit the bell button, and do not forget to like and share the session with all your friends. Take care. Bye-bye, and let's